and this is the continuation of our series of essay writing. And in part 1, we have already covered up that what are the basic components to be included into your essay. Now this is part 2, and this is the time that when we are going to get into the organization of an essay, that how to write a well organized essay and well structured essay here. Now, as I already mentioned you will be given complete 1 hour for completing your writing module. But out of them, you have to devote your 40 minutes to write your essay, that is task 2. Right. Now, second thing is word limit 250 to 280 words limit has been given to you. And if you are writing even one word less than 250, then you will have half band reduction there. Half band lose होएगा with every less written word there. But there is no band reduction for upper limit here if you are writing more than 250, and between 280 there is no any kind of band reduction there. But the problem is that the more lengthy essay you are going to write, there is scope for more repetition and more mistakes there. So it's better just stick to the limit between 250 to 280 words. Now, अब वर्ड्स काउंट कैसे करने हैं? ठीक है, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो सिंगल वर्ड काउंट करते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, देन उसके वर्ड्स काउंट किए, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा, देन उसके वर्ड्स काउंट किए. नो, दिस इज नॉट द मेथड हियर, एंड इन दिस प्रोसेस यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम. Right. So the perfect method to count your word here is that suppose you are writing 9 words per line. Right. And then count your total lines that you have filled up in your writing sheet here. Suppose you have filled up totally 21 lines there. So 21 lines into 9 words per line is equal to what would be your answer? That should be your word limit there that you have counted. Okay, so the people who are appearing for their computer-based IELTS test, so there is no any kind of problem there, because on the screen words will be shown there, that will be displayed on the screen there. So the people who are appearing for pen and paper-based test, they have to count their words like this only. एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, जब आप क्लासेस अटेंड करते हो, देन यही बात आपको समझाई जाती है. एंड मीनवाइल यू प्रैक्टिस योर राइटिंग टास्क डेली टिल द एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम. आपको आइडिया हो जाएगा तब तक कि कहाँ तक मैंने लिखना है, कितनी शीट्स मैंने फिल करनी है कि मेरी वर्ड लिमिट वहां पे सेटिस्फाई हो. ठीक है, सो दिस इज द मेथड दैट count your total lines that you have written plus average word you write, and into that is going to be your answer. Don't write single word there. Okay, this will consume your lots of time there. Next one, we are having a formula that is known as power. And before start writing your essay, आपने statement देखी, सीधा आप लिखना नहीं start कर सकते. You have to do some kind of planning beforehand. राइट. सो आपको प्लानिंग करनी है, एंड दिस इज द फॉर्मूला की प्लानिंग आपको कैसे करनी है. सो you will be given 40 minutes there, and out of them you have to spare 5 minutes for your planning of the essay beforehand. Right. So the first part is planning, which stands for P here. Okay, P is here meaning plan. It means स्टेटमेंट देखी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी इंटरप्रिटेशन हुई जो स्टेटमेंट की, फिर आपको अपने माइंड में थॉट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. ठीक है, बहुत सारे रेलिवेंट थॉट्स भी आएंगे, बहुत सारे इररेलिवेंट थॉट्स भी आएंगे, एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने रेलिवेंट लिखनी है या इररेलिवेंट लिखनी है. इररेलिवेंट लिखोगे देन टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स जाएंगे, रेलिवेंट लिखोगे तो बैंड्स मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज what we mean from planning here. You have to decide between the irrational thoughts and relevant thoughts here. So now one, you have decided your thoughts, you have decided your ideas, and next step is to organize them, that in which body paragraph you are going to include a particular idea, and what are the examples or supporting ideas that you are going to quote there to support your point. Okay, so this is known as organization. Next one, then the step comes here, the third stage is writing. Okay, firstly when you plan, and next one you have to organize your ideas, then after you start writing your essay, and after completion of your writing process you have to do editing, because जब आप running handwriting में लिखते जाते हो, sometimes you don't even get to know कि मैंने बहुत सारी mistakes किए. Sometimes we can do some minor spelling mistakes there, or we can miss some words out during running handwriting. ओके, सो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर. इसको हम अदर वर्ड्स में प्रूफ रीड भी बोल देते हैं. ओके, सो इसको हम प्रूफ रीडिंग भी बोल देते हैं, बट वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट,
मेथड सेम ही है कि आपको अपना जो लिखा है फर्स्ट ड्राफ्ट उसको आपको प्रॉपरली रीड करना है, उसमें जो मिस्टेक्स आपको लग रही है, समटाइम्स स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ मिस हो गया है, देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। एंड लास्ट वन इज योर लास्ट रीडिंग डे। एडिटिंग के बाद आपको एक बार फिर एक रीडिंग देनी है अपने ऐसे को, टू बी डबली श्योर कि नहीं मेरे ऐसे में कोई भी मिस्टेक नहीं है। Okay, so this is the formula that you have to adopt for your proper organization of an essay. Okay, now this was all about the organization. Now we are having a specific formula of, okay, so that was all about our basic organization. Now we are having a general format. No matter that whether you are getting agree disagree essay, discuss both your essay, cause effect solution essay, or advantage disadvantage essay, but there is a general format that you have to adopt for every kind of essay regardless of their kind. Okay, so first one is you have to write an intro para in every kind of essay there, and intro para must be of words 40 to 50 words. This is my expectation, this is my suggestion, but it can be more or less than that. Okay, so intro paragraph should be of 40 to 50 words there. First paragraph intro. Second one, you are going to include your body paragraphs. Okay, and it depends. You can check out on the screen. Body paragraph 1 80 to 90 words, and body paragraph 2 80 to 90 words again. Now body paragraph 3 is optional here because we are having some essay kinds there where we need to make 3 body paragraphs, and other times we need to make only 2 body paragraphs. So this third body paragraph is optional here. If we need that, as like in to what extent do you agree or disagree, and do advantages outweigh disadvantages, in these kind of essays we need to make third body paragraph, but most of the time we don't need to. Just restrict yourself to making only 2 body paragraphs there, that will be enough. Last one is usually going to be your conclusion, because you are going to give a proper ending to your essay, and that should be 50 to 60 words only. Okay, so this is a general format here that every essay type will be based upon. Okay, regardless of their kind. अब उनके काइंड के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट फॉर्मेट है वो हम आगे आने वाली सीरीज में कवर अप करेंगे, पार्ट्स में कवर अप करेंगे। अग्री डिसएग्री होगा एक दिन डिस्कस बोथ वे होगा, देन उसका जो अपना फॉर्मेट है फॉलो करने का रिगार्डलेस ऑफ दिस वन, वो हम चेकआउट करेंगे। ओके, सो नाउ यू हैव गॉट that intro paragraph is going to be first one. Now what inside the intro paragraph? Intro paragraph में क्या लिखना है? Okay, so intro paragraph will always be made up of 3 statements. हमेशा 3 statements से ही बनेगा. Okay, so first one is your general statement here, and that is your main topic. That would be based upon your main topic. For example, they are asking you to write an essay on population, okay, then or maybe pollution, then you have to write a general line there, main topic line there in the starting of your introduction paragraph. Okay, आपको याद होगा कि आपको जब स्कूल में टीचर्स ऐसे लिखने के लिए बोलते थे माय कंट्री, तो आप स्टार्टिंग में कुछ कंट्री की इंफॉर्मेशन देते थे कि आई बिलोंग टू इंडिया एंड इंडिया इज फेमस फॉर फेस्टिवल्स, सबको याद है ये। ओके, so same is like here, we are going to give some journal statement here that is based upon the main topic. So this is our first statement that we need to include into our introduction paragraph. So second statement after, immediately after a journal statement, that is rephrasing statement. So now this is a kind of very interesting part here. एक एग्जांपल देती हूँ आपको। रिफ्रेजिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन पेपर पे, उसको अपनी वर्डिंग में दोबारा लिखना है। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको अपनी वर्डिंग में आपने दोबारा लिखना है। यू कैन चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन, यू कैन यूज सिनोनिम्स देयर। ओके, बट इसका मोटिव क्या है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमको कि उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, देन व्हाई वी आर रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट इनटू वन आंसर। ओके, तो इसका मोटिव ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें कुछ समझाते हैं, ठीक है, तो चेकआउट कि हमने उसी सेम इंटरप्रिटेशन में वो समझा है, या वो जो हमें समझाना चाहते थे तो हमने उसी सेंस में उसको समझा है जो बात को, तो वो हमसे दोबारा पूछते हैं कि क्या समझ आई मेरे बात से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, आपके टीचर्स या जो आपके एल्डर्स होते हैं आपको पहले भी बात समझा देते हैं तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अब बताओ कि क्या समझ आया मेरी बात से। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता और हम कुछ और ही बता रहे थे, उसका टोटली मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बट हियर इफ यू आर मिसइंटरप्रेटिंग योर statement here, question statement here, then you will write all of the essay off track here. You are going to write
ideas that are totally irrelevant here because आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेजिंग करने का मतलब यही है कि जो आपको स्टेटमेंट दी है वो चेक करना चाहते हैं कि आपने उसी मीनिंग में ली है स्टेटमेंट या आपने कुछ और ही मीनिंग बना लिया, ठीक है। तो रिफ्रेजिंग का यही मोटिव है, दैट इट मीन्स टू राइट गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट इनटू योर ओन वर्डिंग हियर। You can use synonyms, okay? You can change the sentence structure. And one thing more here I want to add on is that if you are going to repeat the same words from the given question statement into your answer, then you will not get any answer. कभी भी जो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से सेम वर्ड्स उठा के आपको अपने आंसर में नहीं लिखने हैं, क्योंकि उसके आपको कोई भी आंसर कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। Rather use synonyms or you can change the sentence structure, okay. So last statement into your introduction part is thesis statement. Now this is a very important kind of statement here because ये एग्जामिनर को आइडिया देता है कि आप ऐसे में क्या लिखना चाहते हो, आप अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, ये आपके ऐसे ऐसे को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। दिस गिव्स डायरेक्शन टू योर ऐसे, दिस गिव्स एम टू योर ऐसे हियर। सो इसमें आप अपनी पोजीशन बताओगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस ऐसे में, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली अ समरी। जो आपने पूरा ऐसे लिखना है, अगर आपको बोले कि वो आपका पूरा ऐसे आपको जस्ट एक सेंटेंस में उसकी समरी बना के लिखनी है, उसको हम थीसिस बोलते हैं, ठीक है। So this is your thesis statement and these are the three important statements of your introductory paragraph. That's enough. इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना। Next one is the turn of our body paragraphs here. So body paragraphs आएंगे intro के बाद, and one thing more here to keep in mind is that intro para के बाद आपने आंसर शीट पे एक लाइन लीव करनी है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यहाँ पे अपनी इंट्रो पैराग्राफ की एंडिंग कर दी है, एंड नेक्स्ट यू आर गोना स्टार्ट विद योर बॉडी पैराग्राफ्स, ओके। सो बॉडी पैराग्राफ वन जब आप स्टार्ट करोगे या कोई भी बॉडी पैराग्राफ है उसका एक ही फॉर्मेट होएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक सेंटेंस हियर। इट मींस अगर आप लिख रहे हो एडवांटेजेस, ओके, सो कार्स के एडवांटेजेस है, देन बॉडी पैराग्राफ वन में आप उसके एडवांटेजेस लिखना चाहते हो, देन आप उसकी स्टार्टिंग ऐसे लिखोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ advantages or benefits or merits of using cars, and first one is that it is more convenient, okay. So it is more convenient is the topic word here. तो इस टॉपिक वर्ड के ऊपर ही आप अपना पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बेस करोगे, वन आइडिया पर बॉडी पैराग्राफ। डोंट ट्राई टू मेस अप योर बॉडी पैराग्राफ्स बाय गिविंग लॉट्स ऑफ आइडियाज। तो मेरा सजेशन एंड मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स प्रेफर दिस वन कि एक बॉडी पैराग्राफ में आप अपने एक ही पॉइंट हो, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस हुआ कि इसमें मैं अपनी एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा कार्स की, एंड फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होती है। After that, I'm going to give my supporting ideas and this basically give answer to why. Okay, तो मैंने ये बोला है कि कार्स बहुत कन्वीनियंट होती है, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। मैंने एक्सप्लेन करना है कि मेरे माइंड में क्या आया कि मैंने इसको बोला कि ये कन्वीनियंट है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट, मुझे उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई इट इज very convenient. So that is going to be your explanation, that is going to be a supporting idea. Now next one is example. Without example your IELTS essay is incomplete. To make your argument, these are all your arguments. If you want to make your arguments effective, you have to quote examples here, and per paragraph, per body paragraph, per example is enough. बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, एक बॉडी पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल बहुत होती है, ठीक है। So next one is your last sentence of your body paragraph, that is concluding line. एक लाइन होगी जिसमें आप अपने ये पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करो, ठीक है। So next one we are going to cover up our conclusion part here. So conclusion में क्या होता है, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स होगी 1 2 3 जो भी आप लिखना चाहते हैं, जितनी भी उनकी नंबर है, बट उनका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, टॉपिक सेंटेंस प्लस टॉपिक वर्ड, देन सपोर्टिंग आइडियाज, एग्जांपल्स, एट द एंड कंक्लूडिंग लाइन देयर। अब कंक्लूजन आ गया। सो कंक्लूजन में आपको एक ओवरऑल समरी देनी होती है, जो आपने पूरे ऐसे में लिखा है उसका एक निचोड़, उसका एक सेंट्रल आइडिया आपने लिखना होता है। एंड जो चीज आपने नहीं करनी है कंक्लूजन में वो है नो न्यू आइडिया। कभी भी आपने न्यू आइडिया कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं करना है, okay. The best place to introduce your idea is only body paragraphs. So वहां पे आप अपने कोई भी new ideas introduce कर सकते हो, but not in conclusion. That is not the right place for that.
Next one is no examples. So again, conclusion is not the right place to include your examples too. Examples के लिए भी body paragraphs है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी ओवरऑल समरी देनी है। अगर वो ओपिनियन नीचेड ऐसे है, देन आपको यहाँ पे अपना पॉइंट या आपका जो ओपिनियन था उसको रीस्टेट करना, ठीक है। So that is all about your conclusion here. Now we are going to have a look at different kind of essays, just a glimpse here. We are not going to cover up them in a detail because I have already mentioned it that we are going to cover each essay type accordingly into different parts. Maybe part 3 is going to be about the agree disagree essay. Okay, so हम इसको differently discuss करेंगे हर एक question type को, but now we are going to have a look at a glimpse. Okay, first glance or a glimpse on our essay type. So first essay is big salary is much more important than job satisfaction. Do you agree or disagree? So this is a question which is asking for agree or disagree. Most of the students do mistake of doing partially agree here, but to be very clear here, आप अगर बोल रहे कि मैं अग्री कर रहा हूँ, देन आपको अग्री के पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप बोलोगे डिसअग्री कर रहा हूँ, तो डिसअग्री के ही लिखने हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड इसकी एक और सेकंड टाइप होती है टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, सो टू व्हाट एक्सटेंट का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉट टू मच, एंड वो भी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है इनका फॉर्मेट आपस में, बट दैट डिफरेंस इज आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। And next question is the government investment in arts, music and theatre is a waste of money. Government should invest these funds in public services instead. To what extent do you agree or disagree with this statement? So this is the subdivision or the second kind of agree disagree essay. Okay, we are not going into much detail here, just we are having a glimpse of all the types of essays here. So next one is some people say that the main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals. Others say that there are more important problems. Discuss both these views and give your opinion. So this is discuss both view essay plus give your opinion. And इसकी एक और टाइप होती है जिसमें आपको वो opinion नहीं पूछते हैं, they ask you only to discuss both views only. तो उसमें आपको अपना ओपिनियन नहीं देना होता है। एंड अगेन इन दोनों एसेज का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, एक ही फॉर्मेट नहीं है। Next one is gonna be the use of social media is replacing face-to-face contact with many people. Do the advantages outweigh the disadvantages? So this is advantages outweigh disadvantage. So this is a kind of essay in which you have to make 3 body paragraphs. Okay, एक क्वेश्चन कैटेगरी होगी इसकी जिसमें सिर्फ वो आपको बोलेंगे डिस्कस एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे आउटवे नहीं होगा। So this is another kind of advantage disadvantage essay. Next one is gonna be an increasing number of people nowadays are buying what they need online. What are the advantages and disadvantages? So this is another kind of benefit or merit demerit essay. Last one, we are going to have the major cities in the world are growing fast as well as their problem. What are the problems that young people living in cities are facing with? Give solutions to these problems. So this is your problem solving question here. And in other sense, we can say it cause, effect and solution essay. And इसमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि sometimes they ask you to discuss cause and solution, and sometimes they ask you to discuss all 3 of them. ओके, तो अगर उन्होंने इफेक्ट नहीं पूछे हैं तो आपको नहीं लिखने हैं, कहाँ लिखने हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे जब हम कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन ऐसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट सम रीजंस हियर एंड गिव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हियर. So this is all about the basic types of essay and the organization of essay. I hope you liked it. If you still have any doubts, you can mention them in comment box and we try to cater to all of your doubts because in other parts, no doubt we are going to cover them in more depth here. Till then, stay connected, stay healthy. Thank you so much.